हेलो। कैसा करिए पढ़ाई वो बना हुआ Hello, everyone. Good morning, all of you. I hope you are fine. Now, today we are starting with our next class, some previous year questions of the next third unit, magnetic effect of current. Okay. In magnetic effect of current, we have done about related the magnetic field, magnetic force due to the current carrying conductor. Okay, due to the charge particle, flow of the charge particle due to the current carrying conductor. So, as we know about this one magnetic effect, when charge particle will flow, current will flow through any conductor, then surrounding their magnetic field will be there. ओके किसी कंडक्टर के अंदर से अगर हम करंट पास करते हैं तो क्या बनता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है दैट इज डिपेंड अपॉन योर डिफरेंट फैक्टर्स, amount of the current, distance from the current carrying wire, and angle between your current carrying conductor and with your distance with the where we want to find out this magnetic field. So different factor पे ये हमारे depend करता है clear magnetic field. Okay, then here in this chapter we have done already magnetic force also. Magnetic force will be act when we are keeping current carrying conductor in presence of the magnetic field. जब हम किसी current carrying conductor को magnetic field के अंदर रखते हैं, then their magnetic force will be act on it. क्या लगता है, magnetic force लगता है उसके ऊपर in presence of current as well as the magnetic field. तो force के भी हमने दो relation किए थे, one due to the current carrying conductor and second is the current carrying charge particle in presence of the magnetic field. Okay, so we will do some questions related with this chapter. Now your first question we are reading: a particle of mass m, charge q, describe a circular path of radius r in a magnetic field. If its mass and charge were 2 meter and charge is q by 2 respectively, then radius of its path would be. Now first of all we should know about this one. As any particle will enter in a magnetic field, then it satisfies three types of the path. We have done already that first one is our straight path. Which one? Straight path. Second one is our parabolic path या circular path. Parabolic. And third one is your helix. Clear? As any particle we are passing through in a magnetic field, जब कोई भी charge particle magnetic field के अंदर enter करता है, then it will follow your different type of the path due to the force acting on this one. I told you ना कि अगर कोई charge particle magnetic field के अंदर enter करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, magnetic force लगता है. Magnetic force will be act there, and this magnetic force as charged particle will enter, then it will be equal to F equal to QVB sin theta. Depends upon these different three factors. Okay, so here as this particle will enter in a same angle means parallel to the magnetic field lines, then their angle between them becomes 0. So 0, then we can take their straight path. If your theta will be equal to 0, then path
taken by this charged particle in a magnetic field, then it will be equal to 0 only. It will not deflect here and there. Okay, force 0 होगा तभी क्या होगा, straight path होगा. So it will be deflect here and there not, because here charge angle between them 0. It will travel straight only, कोई force ही नहीं लगेगा, because आपका क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा. थीटा 0 तो force हमारा क्या बन जाएगा, 0. तो force ही नहीं लगेगा, तो जैसे चार्ज इसके अंदर एंटर कर रहा था वैसे ही straight पास कर जाएगा इसके अंदर से. सेकंड है पैराबोलिक पाथ. पैराबोलिक मीन्स व्हेन एनी charge particle will enter in a magnetic field perpendicularly, means your theta equal to your 90 degree. Then in that case, when 90, then sin 90 will be equal to 1. So it will be take place your maximum force, and this maximum force will be equal to your QVB. Okay, because sin 90 will be equal to 1, then force left here, then it will be equal to QVB. Now your next your helix. Helix means taking the like this one path, arbitrary, means this one will be act when theta will be any angle. Theta will be any arbitrary angle except your 0 और 90 डिग्री. 0 और 90 डिग्री को छोड़ के किसी भी एंगल पे अगर वो एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे एंटर कर रहा है, 40 डिग्री पे एंटर कर रहा है, एज दिस वन चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इनसाइड दिस वन, देन इट विल टेक द हेलिकल पाथ लाइक दिस वन. कैसा पाथ लेगा वो, हेलिकल पाथ एक्वायर कर लेगा इन अ प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इफ एंगल विल बी डिफरेंट फ्रॉम 0 और 90 डिग्री, एनी आर्बिट्रेरी एंगल विल बी देयर, 30, 45, 15, 20, any angle will be there, then it will be take the helical type of the path. So these are the three paths which are taken by the charged particle when charged particle will enter in any magnetic field. So here we have to find out their radius. अब radius कहाँ से निकलेगी? Radius for this one your parabolic path means अगर वो charged particle इसके अंदर enter करता है, this charged particle entering, then it will take a circular path like this one, then it will have some radius this one. Clear? So circular path, parabolic path लेगा अंदर एंटर करने के बाद, तो क्या होगी, कुछ रेडियस होगी. सो दिस वन टेक अ सर्कुलर पाथ, सो वन फोर्स विल बी एक्ट देयर, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वी नो अबाउट दिस वन mv²/r. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू mv²/r ओनली. ओके, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू, अब ये जो पार्टिकल इसके अंदर एंटर किया था, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था, वो किस वजह से रिवॉल्व कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से. और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स. ओके, और जो फोर्स हमने पता है क्या होता है, F = QVB sin थीटा. अब साइन थीटा हमें हेलिकल पाथ पैराबोलिक पाथ कब दे रहा है, जब हमारा एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. सो 90 फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, maximum force, and this maximum force equal to QVB. So using this one, then 1V to 1 we cancel out, then R we have to find out, R equal to your QB by your MB. So this formula came of our radius. किसका फॉर्मूला आ गया, हमारा रेडियस का फॉर्मूला आ गया, हमें पाथ की रेडियस ही फाइंड करनी है. नाउ रीड अगेन दिस वन फर्स्ट लाइन, पार्टिकल ऑफ मास, जो पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहा था जिसका मास क्या है m, चार्ज क्या है q, अ सर्कुलर पाथ रेडियस क्या है r. तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, तो जो गिवन कंडीशन है उन्हीं को अप्लाई करें, दैट इज गिवन according to given terms, then r, capital R, radius given already of the first part, capital R, then charge q and your b magnetic field में enter कर रहा है, then divide by your mb, mass given already m and your radius is b. This one our first equation. Now see next line, if its mass and charge were 2m and q/2 respectively, अगर आपका मास क्या है 2m है और चार्ज क्या है q/2 रिस्पेक्टिवली है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इस पाथ की. ओके, तो रेडियस हम निकालेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगी, r इक्वल टू योर रेडियस इन सेकंड केस वी कैन रिलेट हियर वी आर टेकिंग देयर r डैश. तो r डैश हमें फाइंड करना है इस कंडीशन के ऊपर. तो हमारा चार्ज क्या है q/2, चार्ज गिवन है इस टाइम पे q/2. b सेम मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, mass now this time is equal to 2m, so mass we are writing there 2m and into your v velocity. Clear? So here we can write this one qb by your 4mb, this one our r dash. Here
this one our r dash. So here as we will compare this one factor with this first equation, so this one term we can write there equal to your capital R. Yes, because your QB by equal to your MB, then we can write it capital R. So R dash we can write there R by your 4. Clear? So your resistance, unknown resistance which you have to find out, its value is equal to your R by 4. Initial radius divided by your 4. So here which one is right option? Your first is our right option using this one. क्लियर? तो आपको बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस वन चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो किस टाइप का पाथ लेता है. अगर पाथ गिवन तो आपको एंगल पता होना चाहिए कि कितने एंगल पे कौन सा पाथ एक्वायर करेगा. देन हाउ यू कैन फाइंड इट्स थ्योरी. ये थ्योरी आपको लर्न करनी पड़ेगी कि दिस वन इज अ कंडीशन फॉर द सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ एट 90 डिग्री एंगल. सो एट 90 डिग्री एंगल देन वी कैन सेटिस्फाई दिस वन कंडीशन, देन वी कैन फाइंड देयर आर. इन्हीं रिलेशन को यूज करते हुए आपको वेलोसिटी भी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है. सो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट दिस वन. काइनेटिक एनर्जी वी कैन फाइंड बाय यूजिंग योर हाफ mv स्क्वायर ओनली. सो हियर mv की वैल्यू हमारे पास आ जाती है दैट mv इक्वल टू योर qbr. सो हाफ mv स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट. सो पुट हियर mv स्क्वायर वैल्यू, देन योर kinetic energy will be there. Using this one we can find their velocity. Velocity equal to qb by your mr, like this one. So different formula you have to learn using this one. Now see our next question. A galvanometer of the resistance 50 ohm is converted into a voltmeter. It's converted into a voltmeter of range is equal to 0.2 ampere using a resistor of your 1 kilo ohm. If it is converted into a voltmeter of range 0 to 10 volt, then the resistance what will be there? रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है. ये कह रहे कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या 50 ओम है, जिसको हमने कन्वर्ट करना वोल्ट मीटर में. फर्स्ट यू शुड नो अबाउट दिस वन, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस वन इन वोल्ट मीटर. कि गैल्वेनोमीटर की ये बेटा आपके टॉपिक में आता है कि गैल्वेनोमीटर की थ्योरी के बाद हाउ यू कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू दी एमीटर. दीज आर द टू टॉपिक्स. ओके, सो आउट ऑफ दिस वन योर टॉपिक हियर आस्क देयर गैल्वेनोमीटर ओम जिसका 50 ओम रेजिस्टेंस है उसको कन्वर्ट किया गया वोल्ट मीटर में और जिसकी रेंज क्या 0 से 2 वोल्ट यूजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 किलो ओम. कितना रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं 1 किलो ओम. सो इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर दिस रेंज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वन फर्स्ट इक्वेशन, देन हियर वी कैन राइट देयर टोटल पोटेंशियल then here equal to here potential as we are taking this one galvanometer and here we are connecting a resistance and this one galvanometer resistance we are connecting, then Ig we are flowing through it, current we are flowing through it Ig only. So as we are connecting a resistance in series with the galvanometer, then it will be converted into your voltmeter. तो complete किसमें हो जाएगा, हमें voltmeter में convert हो जाएगा. So as we are connecting your resistance in your series with the galvanometer, then it will be work as a voltmeter. So इसकी इक्वेशन के लिए हमारा टोटल करंट क्या हो रहा है Ig. पोटेंशियल की इक्वेशन अगर हम लिखें देन टोटल पोटेंशियल इक्वल टू Ig here G potential along potential drop along galvanometer plus here potential drop along the resistance which we are connected in series. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास V इक्वल टू Ig वी कैन टेक कॉमन. सो हियर वी कैन राइट देयर G प्लस R. क्लियर. G प्लस R आएगा तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में क्या गिवन है, वोल्ट मीटर की रेंज गिवन है 10 वोल्ट. रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाला रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट जो आपकी लाइन है इसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज अगर पुट कर रहे हैं तो 50 ओम का क्या गिवन आपको रेजिस्टेंस गिवन है. रेंज हमारी वोल्टेज कितनी गिवन है 2 वोल्ट. Ig not given, that's why we are writing as it is only. G galvanometer resistance given here 50 plus your R is given here 1 kilo ohm. 1 kilo ohm means we can write there 1000 ohm. Here not given SI unit, that's why we will convert into SI unit. 1 kilo ohm equal to your 1000 ohm. So here Ig we can write here. Ig क्या आ जाएगा, this one we can take here in division. So here Ig equal to your here 2 equal to your 50 plus your 1000. So Ig we can write here 2 by 1050 ampere. Clear. उसके बाद क्या है
इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर की रेंज से कन्वर्ट करना, रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है. सो हियर वी आर यूजिंग दिस वन. दिस यू हैव टू फाइंड आउट इन नेक्स्ट. इफ वोल्टेज इज बिकम्स योर 10 volt, so how we can write this one? As we know, V equal to your Ig, G plus your R dash new resistance when voltage here, if given आपको, if V equal to 0 to 10 volt, then G equal to your galvanometer वही same रहेगा 50 ohm, clear? Then R dash we have to find out. और Ig कहाँ से आएगा? Ig हमारा आ गया, ये ऊपर से निकाला अभी Ig. So put here now on 60 volt equal to Ig we can write there 2 by 1050. G is equal to 50 ohm plus your R dash. Now here we will solve it. R dash 10 into 1050 divided by 2 equal to 50 plus R. So 2 to 5, then here will be equal to your 0, 5 to 5 equal to your 50 plus R dash. Now here R dash we can write there, R dash equal to your 50 to 5 minus your 50. So subtract is then here left 5 to 0 0 R dash. So this one resistance came. Now see your answer. This one, this only we have to find out. Now here resistance will be, options are given in kilo ohm. That's why we will convert into kilo ohm this one. As we will convert this one in kilo ohm, then it will be your 5.2 kilo ohm. So now check your answers. Here 4.85 and here C here 5.2 kilo ohm. So here this one will be a right option. I hope you understood beta this one question. In this one here, this question is related to the how we can convert galvanometer into voltmeter. और ये क्वेश्चन तभी सोल्व कर सकते हो जब आपको ये बताओ कि वोल्टमीटर बनाया कैसे जा सकता है galvanometer को यूज करते हुए. Okay, this one we can make when we will connect any resistance in series with our galvanometer, then we can convert into your वोल्टमीटर. सो इसको यूज करते हुए हमने अपनी इक्वेशन बनाई, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू योर पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग द गैल्वेनोमीटर प्लस योर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, then your Ig we can take common, then G plus R, then here we can write there this one here 2, then putting value, then Ig will be equal to this one. So again we are applying this equation using this one, then V equal to 10 volt. अब वोल्टेज क्या है, वोल्टमीटर की वोल्टेज हम क्या रख रहे हैं 10 वोल्ट. अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, वो चेंज हमने निकाला है इसको यूज करते हुए. सो 10 वोल्ट Ig इक्वल टू योर 2 by 1050 plus your G50 plus your R dash. So using this one, then R dash came our 5.2 kilo ohm. Now see next question. A region has a uniform magnetic field in it. Region has a uniform magnetic field. A proton enter in the region with the velocity making an angle 45 degree with the direction of the magnetic field. ये कह रहा है कि magnetic field we are providing, this magnetic field we are providing, और इस magnetic field के अंदर क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, एक चार्ज पार्टिकल क्या है एंटर कर रहा है. दिस वन योर चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब चार्ज पार्टिकल किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहा है. दिस प्रोटॉन पार्टिकल इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद मेकिंग सम एंगल 45 डिग्री. जिस एंगल पे ये एंटर कर रहा है वो एंगल क्या है, इसके साथ आपका 45 डिग्री के साथ ये एंटर कर रहा है इसके अंदर. ओके, एट विच एंगल, 45 डिग्री एंगल. दिस वन इज 45 डिग्री एंगल. किस एंगल के साथ एंटर करा, 45 डिग्री एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ. सो थीटा इक्वल टू 45 विद द डायरेक्शन. तो कह रहा है इन दिस रीजन द पार्टिकल विल मूव विद द प्रोटॉन विल मूव ऑन द पाथ हैविंग द शेप ऑफ दिस वन. इन फर्स्ट क्वेश्चन आई टोल्ड यू एनी पार्टिकल विल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल टेक अ 3 टाइप ऑफ द शेप. अभी मैंने बताया था कि कितने टाइप की शेप लेता है, 3 टाइप ऑफ द शेप. वन इज स्ट्रेट पाथ, सेकंड पैराबोलिक पाथ एंड थर्ड वन इज अ हेलिक्स.
ओके, स्ट्रेट पाथ कब लेगा? जब कोई चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मींस थीटा क्या रहेगा? 0 रहेगा स्ट्रेट पाथ। अगर 90 पे एंटर करेगा परपेंडिकुलरली इट विल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल टेक योर parabolic path या circular path we can say. And third one, any arbitrary angle, means except your 0 or 90 degree angle, then it will take the helical path, your helix. So I hope you understood answer of this question. You can do very well. Charge entering in this one, so it will not take straight path क्योंकि एंगल क्या हमारा 45 डिग्री, किस पे एंगल पे एंटर कर रहा है? 45, ना तो 0 है ना 90 डिग्री है, ना 0 ना 90, तो इन विच पाथ? Helical. Okay, so straight path, not circle, not spiral, and it will take your helix. Easy. Now next question here, this one. Here a current I flowing through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius is r in a middle as shown in figure. ये कह रहा है कि एक circular loop है through a long straight wire. This one long straight wire. Okay, this one long straight wire, then from here this one complete circular loop, then again long straight wire, then parallel to it, then its radius is r, then O point. हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दी O पॉइंट. O पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड. देखो ऐसी तो कोई डेरिवेशन नहीं की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर प्लस सर्कुलर वायर. नो, वी हैव डन सेपरेट derivation of the magnetic field due to the circular wire and magnetic field due to the straight wire. Okay, so first we can find their magnetic field due to the straight wire. Magnetic field due to, first we are taking circular wire. Its formula is equal to your B equal to your B1, we can write it B1 equal to your mu naught I by 2r. Its radius is capital R given in our question, capital R only, that's why we are taking here capital R only. Okay, current I flowing through it, I only given, not having any value, this value only, I only, that's why we will keep as it is I only. तो ये क्या है? इस पोर्शन की वजह से, इस कंप्लीट सर्कुलर की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या फ्लो कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है. नाउ लेफ्ट दीज टू पोर्शन, वन इज दिस वन इज दिस वन. अब दो हाफ स्ट्रेट वायर. अब हमें पता है कि एनी स्ट्रेट वायर इज देयर, then you want to find out magnetic field near the one end of this straight current carrying wire. This one is going on up to infinite. तो हमें क्या निकालना है? इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रेट वायर B इक्वल टू यार म्यू नॉट I बाई दिस वन I. समझ ही ना आए. B equal to mu naught I by 4 pi I sin phi 1 प्लस ईयर साइन phi 2. ये क्या होता है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर होता है. अब स्ट्रेट वायर के अंदर भी डिफरेंट केसेस होते हैं कि एक केस हमारे पास जो केस है वो ये है कि दिस पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज लाइन नियर दी वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग वायर. ये कहाँ पे है? इसके एक एंड पे है करंट कैरिंग वायर पे, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है. सो हियर दिस वन इज एंगल हियर 0 ओनली. हमारे पास ये मेथड, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का मेथड क्या होता है बेटा? जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे हम जितना बड़ा वायर है उस दोनों एंड को हम उस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन कर लेते हैं. क्लियर? phi 1 phi 2 क्या है हमारे पास? दिस इज द एंगल फ्रॉम दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी बोथ एंड ऑफ द करंट कैरिंग वायर. जहां पे दोनों वायर के दोनों एंड है उनको ज्वाइन करने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनता है उस पॉइंट से उनके बीच का जो एंगल बनता है दैट इज phi 1 और phi 2. तो यहाँ पे अगर हम phi 1 अगर बना रहे तो परपेंडिकुलर भी यही है, इस एंड को ज्वाइन करें तो भी यही है, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? इस केस के अंदर 0 एंगल हो जाएगा. सो साइन 0 क्या बचेगा हमारे पास? 0. अब बचा phi 2 एंगल. phi 2 के लिए अगर हम इस एंड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगा इसी के लॉन्ग. अब इस एंड को अगर हम ज्वाइन करें तो कहां तक जा रहा है? ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपका. लॉन्ग स्ट्रेट वायर मींस गोइंग अप टू द इनफाइनाइट. अगर इसको ज्वाइन करने चले तो यहाँ से कैसे अपीयर होगा? ये ऐसा अपीयर होगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री. इट्स एंगल अपीयर एज अ 90 डिग्री एंगल. सो साइन 90 क्या हो जाएगा हमारे पास? इट्स विल बी 1 ओनली. क्लियर? तो ड्यू टू वन स्ट्रेट वायर देन B विल बी इक्वल टू योर म्यू नॉट I बाई 2 पाई. हम यहाँ पे लिख सकते हैं A B C D.
दिस वन वी आर डिवाइडिंग लाइक दिस वन। तो हमारे पास ऊपर वाले ए बी वायर के पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, बी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कौन से वाले पोर्शन की बात करें हम, ए बी की, देन इट्स बी टू वी आर राइटिंग देयर म्यू नॉट आई बाई यर 4 pi r. This one distance here r only, that's why we are writing capital R only. Now left this one CD also left wire, CD भी left है और CD के along भी क्या है, यही केस है बेटा, this one point is lie near the one end of this complete long straight current carrying wire. So B vector due to long straight current carrying wire CD. तो CD की वजह से भी हम लेट वी आर एज्यूम B3, इसको हम B3 एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा म्यू नोट आई बाई आर 4 पाई आर, म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई 1 2 3, क्योंकि इसके अंदर क्या थे 3 पार्ट्स थे, इस डायग्राम के अंदर क्या थे 3 पार्ट्स थे, 2 तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड 1 सर्कुलर वायर। तो तीनों पोर्शन की वजह से क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्ट दीज टू वी कैन ऐड, तो हमारे पास ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की वजह से पहले निकालेंगे कंप्लीट। सो हियर वी कैन राइट देयर बी डैश इक्वल टू B2 प्लस हियर B3। B2 क्या आया था हमारे पास, म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर प्लस B3 also म्यू नोट आई बाई आर 4 पाई आर। Here, so as we will solve this one, then B dash our came equal to म्यू नोट आई बाई आर 2 पाई आर। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, because both are same, so same ना both ऐड करेंगे then it will be equal to this one. अब now we can't add this one with this one. Why? Because here we have to see direction. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर बेटा सम करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, उसी डायरेक्शन के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन हाउ वी कैन फाइंड, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज देयर, सो डायरेक्शन वी कैन फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। विच रूल वी आर यूजिंग? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि थंब वी आर कीपिंग इन डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड आवर कर्ल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ स्ट्रेट वायर की वजह से अब गोइंग करंट इन दैट डायरेक्शन, तो O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखनी है, O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी है। तो हमने करंट कहाँ, थंब कहाँ जाएगा, नीचे, डाउनवर्ड करंट नीचे जा रहा है, तो इधर से अंदर की तरफ और इधर से क्या निकलेगी, फिंगर बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट की, इस स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बन रहा है आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्या बन रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ड्यू टू द करंट कैरिंग दिस वन पोर्शन, इस पोर्शन की वजह से करंट ऐसे जा रहा है, इधर से इधर गया, इधर से इधर, इधर से वापस आ गया। अब इस पोर्शन की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, नाउ कर्ल्ड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ द करंट। सर्कुलर वायर में क्या होता है कि कर्ल फिंगर वी विल कीप इन डायरेक्शन ऑफ द करंट, और थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताएगा। सो दिस वन इन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन इट विल बी गो इनवर्ड डायरेक्शन। कहां जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। दिस वन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वन विल गो इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रही है। तो हमारा इस पोर्शन की वजह से हमारा क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और ड्यू टू स्ट्रेट की वायर की वजह से आ रहा है आउटसाइड। तो हम टोटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ना कि एडिशन करेंगे। So here total magnetic field due to direction, here due to direction. Now total magnetic field due to both circular and straight wire. So here B we can write there B1 minus here B dash, because both are in opposite direction. Okay, because both are in opposite direction, that's why we are taking subtraction. अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होती then we can add this one, तो क्या कर देते, ऐड कर देते, बट अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस वन। सो B1 हमारे पास क्या आ रखा है, B1 इज इक्वल टू सर्कुलर वायर, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R, म्यू नॉट आई बाई
2r minus your b dash equal to your mu naught I by your 2 pi r. क्लियर? अब इसको यहाँ से क्या है कॉमन निकाल लेंगे, सेम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएगा b इक्वल टू योर म्यू नोट I and 2r and here 2r we can take common from here, then inside left here 1 minus 1 by 5. ये क्या आ जाएगा हमारे पास दिस वन SI यूनिट ऑफ दिस, ऑलवेज राइट बेटा SI यूनिट इज टेस्ला. So this one are our magnetic field due to this complete diagram. Now check your answer, which one is right? Here which one option is right? This one 0 wrong, here plus this also here wrong, this one also wrong. Now here will be here minus. Clear? Okay, if you MCQ are coming then without solution you can do, because we know about this one direction. First हमें direction check करो, direction check करने से ही पता चल जाएगा दोनों का magnetic field क्या होगा, add होगा कि subtract होगा. Subtract हो रहा है तो addition वाली term तो वैसे ही जीरो cancel हो जाएगी, जीरो तो आ ही नहीं रहा. So this one D will be right option of this question. I hope you understood beta this question. This one 2020 PYQ. Now see next question. An electron is released from rest in a region of a uniform electric and magnetic field acting parallel to each other. Then electron will take which type of the path? ये कह रहा है electron is released in a from the rest. Electron is moving from a rest. Electron क्या move कर रहा है from the rest in a uniform electric and magnetic field acting parallel to each other. Both are acting parallel to each other, not perpendicular with each other. Then force will be there. No, only then it will, because both are parallel. Magnetic force will be there when charged particle F equal to Q V B sin theta. Force will be act on it when if your theta will be 90 degree or any another angle, arbitrary angle will be there, then your we can say force will be act on it, then it will change any path. तब क्या करेगा ये अपना पाथ चेंज करेगा. क्लियर? बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनेगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी फ्लो की वजह से बना, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है, देन बोथ आर एक्टिंग पैरेलल विद ईच अदर. क्या कह रहा है? पैरेलल. ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल? एंगल बिटवीन देम इज जीरो. ओके, पैरेलल का मीनिंग क्या रहेगा? थीटा इज इक्वल टू जीरो. जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर एंटर कर रहा है, बोथ आर एक्टिंग पैरेलल विद ईच अदर, नॉट मेकिंग एनी एंगल, मींस थीटा इक्वल टू जीरो. अब यही था कि अगर वो कुछ बनाएगा तो फोर्स कब लगता है? इक्वल टू QVB. थीटा अगर कुछ एंगल बनेगा तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे थीटा ही जीरो होगा तो कंप्लीट को क्या कर देगा? जीरो कर देगा. देन फोर्स विल बी नॉट देयर, तो फोर्स ही नहीं लगेगा. इफ देयर इज नॉट एक्ट एनी फोर्स देन इट विल बी टेक स्टेट, जैसे वो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा. फोर्स विल बी कंप्लीटली जीरो. सो ए विल बी राइट ऑप्शन. सो रिमेनिंग विल बी रॉन्ग ओनली. नाउ see next one question. A straight current carrying conductor is placed inside a uniform magnetic field, then force per unit length acting on it the conductor will be. ये कह रहा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर है, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन विल बी दिस वन. तो फोर्स हमें निकालना पड़ेगा. देन फोर्स will be maximum on the conductor is a perpendicular to the direction of magnetic field. Yes, if it will be perpendicular, अगर कंडक्टर क्या है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा, मींस योर थीटा इज इक्वल टू जीरो, सॉरी 90 डिग्री. परपेंडिकुलर का मीनिंग 90 डिग्री, नॉर्मल एंगल परपेंडिकुलर, देन फोर्स विल बी बिकम्स योर मैक्सिमम. सो दिस वन राइट. Now remaining you can read maximum when conductor along the direction. No, along the direction का मीनिंग क्या रहेगा? थीटा जीरो हो जाएगा. So this one we can't say maximum. This one also wrong condition. Now minimum when conductor is perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ द. अभी हमने किया था कि परपेंडिकुलर अगर होगा तो हमें क्या देगा? मैक्सिमम देगा, ना कि मिनिमम देगा. सो दिस ऑल्सो ए रॉन्ग ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट योर मिनिमम व्हेन कंडक्टर मेक्स एंगल 45 डिग्री. नो, 45 पे मिनिमम नहीं बनाता. मिनिमम कहाँ बनता है आपका? जब थीटा क्या होता है? जीरो होता है, पैरेलल होते हैं. सो बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, देन इट विल बी योर मिनिमम. सो योर फर्स्ट वन ओनली राइट ऑप्शन ऑफ दिस वन क्वेश्चन. Now see
Next question, a current of the 10 ampere is flowing from east to west in the long straight wire. ये कह रहा है कि then a current is carrying 10 ampere from east to west in a long straight wire. We are writing their direction east, west, north, south. Like this one we can indicate. तो कह रहा है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट. लाइक दिस वन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट 10 एम्पियर. केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है. देन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ड्यू टू नॉर्थ. नॉर्थ से 10 सेंटीमीटर पे ऑन द टेबल, नॉर्थ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस. लेट वी आर टेकिंग दिस वन पॉइंट ऑन P, 10 centimeter from its table. 10 centimeter means we can write there 0.1 meter. Converted into meter SI unit. Okay. Current already given in SI unit. तो हमने P point पे हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना. क्लियर. लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट मतलब बोथ एंड क्या हो गया आपके अप टू दी इनफाइनाइट. तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है, स्ट्रेट वायर की. अब देखो, out of these four we can check your first direction. Now current is going on this one direction. By which rule we can find their direction? For direction of magnetic field, direction of magnetic field we are using their which rule? Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Clear? According to right hand thumb rule, thumb we will keep in direction of the current. Current is going on this direction. Then here fingers will go in which direction? On P point. P point पे हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ हमें चेक करनी डायरेक्शन. Now see your direction of fingers. Current in this direction, finger is going on inward direction. Inward का मतलब अंदर की तरफ जा रही है. Clear? So going on this one. Now here which one will be, outward or downward? Which one? Going in downward direction inside the board. So upward one will be option wrong. So आपको चेक करना है इन दो ऑप्शन में से आंसर क्या आएगा जिनके अंदर डायरेक्शन क्या आपकी इनवर्ड डाउनवर्ड जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है. तो इन्हीं दो में से आपका आंसर मिलेगा. आंसर कब मिलेगा? जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता चल गई. क्लियर. बट क्लियर आंसर के लिए हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए. मैग्नीट्यूड के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर. स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I by 4 pi r. Radius means distance. R sin phi 1 plus your sin phi 2. This one is a magnetic field due to the long straight current carrying wire. अब हमारा R क्या, distance, perpendicular distance from the current carrying wire up to that point, and this distance is given here 0.1 meter. क्या क्या given आपको क्वेश्चन के अंदर, जो given terms है वो given आपको I equal to 10 ampere, R equal to your R given equal to 0.1 meter, I equal to 10 ampere, R equal to 0.1 meter. तो I given है, R given. अब phi 1 phi 2 given है, but we should know about this one. क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि long straight wire. Okay, this one is a long straight wire. Long straight का meaning क्या है? This one wire is going on, both end is going on till infinite. दोनों end उस wire के कहाँ तक जा रहे हैं? Infinite तक जा रहे हैं. अगर हम infinite, अब मैंने बताया था phi 1 और phi 2 क्या होते हैं, वो एंगल होते हैं जो एंड से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में जो एंगल बनाते हैं, दैट इज इक्वल टू phi 1 और phi 2. अगर इधर एंडलेस है तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ अपीयर होगा दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेम हियर अनदर साइड आल्सो अपीयर एज अ 90 डिग्री एंगल. सो बोथ एंगल आर हियर 90 90. ये भी 90, ये भी 90. 90 90 क्या हो जाएगा 2, दिस वन 1 प्लस हियर 1, सो 1 1 2. सो स्ट्रेट वायर के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ड्यू टू स्ट्रेट वायर म्यू नॉट I by your 4 pi r into your 2. 1 plus 1 2 only. So 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा. B इक्वल टू म्यू नॉट I by your 2 pi r. B स्ट्रेट. तो स्ट्रेट के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया. अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे. वैल्यू क्या क्या हमारे पास, B स्ट्रेट, B इक्वल टू म्यू नॉट. म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं. म्यू नॉट हमें पता है क्या होता है, 4 pi into 10 raised to power minus 7. It is permeability, not permittivity. Permittivity is epsilon naught. In first unit you have done this one, permeability. Permeability, its constant value
4 पाई इंटू 10 raised to power minus 7 into current, flow of current how much there, 10 ampere given हमारे पास, divide by your 2 pi into your r क्या given है, distance 0.1 मीटर given है, 0.1, okay, here 10 सेंटीमीटर गिवन था, 10 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया, सो हियर विल बी इक्वल टू 1.0, 10 सेंटीमीटर है ना, 0.10, अदरवाइज 2 जीरो हम ऊपर लगा देंगे. सो हियर वी कैन राइट देयर बी स्ट्रेट, यहीं पे निकाल रहे हैं इसको कैलकुलेशन को. सो बी स्ट्रेट हमारे पास क्या आ जाएगी, सो दिस कैलकुलेशन हियर पाई टू पाई कैंसिल आउट, 2 लेफ्ट हियर, 2 into your this one your 10 divide by 0.10 into 10 raised to power minus 7. अब यहाँ से इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 2 जीरो और लगा देते हैं. सो 10 to 10 कैंसिल आउट, देन हियर विल बी लेफ्ट हियर 10 raised to power minus 2, यहाँ से 2 पावर 10 raised to power 2 minus 7, तो यहाँ क्या बचेगा, -5 बच जाएगा. सो बी स्ट्रेट हमारे पास क्या आ गया, टेस्ला. Its SI unit is Tesla. It is vector quantity. Its direction is vertical downward. So which one is right option? A1. 2 into 10 raised to power minus 5 Tesla. Okay. So these also are wrong option. 4 coming na here. So 4 is wrong. Now see our next question. Question number 8. Now electron and protons are moving along the same direction with the same kinetic energy. They enter in a uniform magnetic field perpendicular to their velocities, then dependence of the radius on its path with their masses. अब यहाँ पे radius और mass relation we have to find out if both are having same kinetic energy. Same kinetic energy means here any particle will enter in a perpendicular to the magnetic field. So then what is the condition? When charge particle enter in your magnetic field, so here we can write there q vb, maximum force will be equal to your centripetal force mv square by r. so यहां से हम क्या निकालेंगे यार, mv equal to your qvb, sorry qrb, this one, okay. तो R हमने निकाला था, then from here R we know about this one, R equal to your mv by your qb only, then mv equal to your this one, then here from here we can write there mv square r, here half mv kinetic energy equal to your 1 by 2 mv square. So mv square we can write there 1 by 2 m, and v we can write there, v square we can write there mv divide by m square v square. Both side we are dividing, so we know about this one here, m 1 by 2 m q r p. This one it came because here square of this one, then here we can write there whole square, this one. Clear? So here we can write there q square by r square b square by your 2m. This one is our formula of our kinetic energy. So here we have to find out relation with your r only. What is the relation with r? So r is how we can depend this one. R का relation निकालना, अगर आपका kinetic energy both are your same only, this one our kinetic energy, then electron and proton we know about this one, both are having mass same only, mass and proton, sorry not same, then mass of proton is equal to your 1.6 into 10 raised to power minus 27, electron your 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. क्लियर? बट यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा मास के साथ. तो यहाँ पे हमारा रिलेशन आ चुका है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की अगर सेम है तो हमारे पास क्या है कि आर स्क्वायर का एम के साथ क्या रिलेशन बनेगा. तो आर इज कमिंग हियर, आर डिवाइड बाय योर एम
remaining directly proportional to our kinetic energy. So both are having same proton proton का हम लेके चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए r square इलेक्ट्रॉन by your mass of electron kinetic energy का inversely relation. So both are having same kinetic energy. So from here we can write there r square is here directly to the m square. R square is, we can take this one, this relation here. So here mass of proton, mass of radius of proton. So square we can take this side, then R will be here depend upon your under root of the m. So here which one is right here? B will be right option. तो R कैसे डिपेंड करता है आपका? अंडर रूट m पे डिपेंड करता है. तो ये वैल्यूज हम यूज करते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता वो वैल्यू पूछता, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ रिलेशन पूछ रहा है कि रेडियस का मास के साथ क्या रिलेशन होता है. सो रेडियस का मास के साथ क्या होता है? अंडर रूट m का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ. नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ करंट कैरिंग वायर kept in a uniform magnetic field will experience a maximum force when. ये कह रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स. कब ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगा? सो हियर ऑन परपेंडिकुलर इट विल अप्लाई मैक्सिमम फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू योर QVB. Now next parallel to the known, this one also remaining are wrong. In that case it will be take your helix and in that case it will be take straight only. स्ट्रेट पाथ. सो फोर्स विल बी इक्वल टू 0. तो इस केस में क्या रहेगा? फोर्स हमारा 0 रहेगा और इस केस में क्या रहेगा? फोर्स हमारा मैक्सिमम रहेगा बिकॉज sin 90 becomes your 1 only. That's why. Now see next question. A M meter is used to be placed in a voltmeter, then we must be connect with the L meter. अगर हम एमीटर को यूज करते हैं प्लेस ऑफ द वोल्ट मीटर तो हमें एमीटर को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए वी यूज्ड देयर इन सीरीज. नाउ हियर हाउ वी कैन कनेक्ट दिस वन एमीटर विद गैल्वेनोमीटर, देन इट विल बी वर्क एज अ ammeter. So how we can connect this one? Your high resistance we will use in parallel, then it will be work as a ammeter. There is a two application of the galvanometer, so this one is also one out of these two. Now next you are a straight conducting rod of length L, mass m is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible string in a magnetic field of magnitude is V. अभी क्या स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ क्या गिवन है? m l गिवन है और मास क्या गिवन है? m गिवन है. इस सस्पेंडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. किसको सस्पेंडेड किया गया? उस रोड को हॉरिजॉन्टल सस्पेंड किया गया ऐसे. सस्पेंडेड बाय अ पेयर ऑफ द पेयर मींस टू स्ट्रिंग्स यूज्ड देयर. टू स्ट्रिंग्स का पेयर यूज किया गया है जिसकी हेल्प से उसको हॉरिजॉन्टली हैंग किया गया है. जिसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? l गिवन है और मास क्या गिवन है? m गिवन है. क्लियर? स्ट्रिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज b, जिसके अंदर वो सस्पेंडेड किए गए हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका b गिवन है. टू रिमूव द टेंशन इन दैट स्ट्रिंग, जो टेंशन कहाँ लगती है? हमेशा कनेक्टिंग पॉइंट की तरफ लगेगी. T1 T2 बोथ आर डिफरेंट स्ट्रिंग, बट ये कह रहा है कि टू रिमूव दिस वन, हमने क्या टेंशन को रिमूव कर दिया गया. वी आर रिमूविंग दिस वन. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर? करंट हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो करंट इसके ऊपर लगेगा वो कितना होगा. क्लियर? तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें तो क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. अगर एक फोर्स इसको सस्पेंडेड फ्रीली सस्पेंड कर रखा है तो हमारे पास क्या लगेगा? जी भी लगेगा. तो इट्स मास इज m, सो जी विल बी एक्ट इन विच डायरेक्शन? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसकी वजह से जी कहाँ लगेगा? ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन. m मास इज देयर तो वेट भी होगा ना कुछ, तो वेट हमेशा क्या लगेगा? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. ओके, सो अनदर फोर्स देन विच वन बाय विच इट विल बी हैंगिंग इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. करंट कंडक्टर की बात कर रहे हैं. सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्ट देयर एंड मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू current carrying conductor in B के अंदर. ओके, सो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? BIL.
मैक्सिमम साइन थीटा रहेगा. ओके, सो थीटा विल बी इक्वल टू योर 90 डिग्री मैक्सिमम केस. सो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हैंग कर रखा है उस टाइम पे वेट लग रहा है, वो हमारा वेट क्या लग रहा है, ड्यू टू वेट इक्वल टू योर mg ओनली. So this one your first equation, this one our second equation. So both forces are balanced. We have to find out I. I निकालना है, तो यहाँ से I क्या निकल जाएगा, using both equation, using equation first and second. So from here we can write there VIL equal to your mg. बिकॉज इस हैंग जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा उतना ही क्या है, ऊपर की तरफ लगेगा. सो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो हमें करंट निकालना, तो करंट यहाँ से क्या आ जाएगा, mg by ईयर. नाउ हियर आंसर आवर I इक्वल टू mg by ईयर. Okay, so I equal to, now check here which one is right option. Our current came, current only we have to find out. So current equal to your mg by VL. This one is right option. So these are remaining wrong. Then your mg by LV. This one is our right option of this one question. I hope you understood question. This one your last question of our class. So thank you for watching today our class. In next question class we will discuss next topic, PYQs of next minute. So read this topic properly for your exam. Prepare well.